मेरा जो कैरेक्टर है मारीगोल्ड में, इट्स दैट ऑफ सलमान्स फ्रेंड एंड ऑल्सो द फर्स्ट पर्सन हु बिफ्रेंड्स एली लाटर व्हेन शी कम्स टू इंडिया. रानी है कैरेक्टर का नाम, और वो एकदम झक्कास किस्म की लड़की है. नो वंडर विलार्ड कैरल जो मेरा डायरेक्टर है, उन्होंने दिल चाहता है पिक्चर देखा था जहाँ पे मैंने सैफ अली खान को थप्पड़ दिया था ज़ोर से. तो उन्होंने वो देख के डिसाइड किया कि ये लड़की रानी की रोल प्ले करेगी. किसी और को टेस्ट नहीं किया था उन्होंने, मुझे भी टेस्ट नहीं किया. इंडिया आए, मुझे बोला गया कि आफ्टर सलमान यू आर द नेक्स्ट पर्सन आई हैव डिसाइडेड ऑन फॉर दिस मूवी, और आप रानी का रोल करेगी. एंड दैट्स द एंड ऑफ द डिस्कशन. तो तब से मेरा कनेक्शन है इनके साथ, एंड वी वर ऑलवेज इन टच. जो भी डिलेज होते रहे, वी वर ऑलवेज इन टच, एंड आई डिसाइडेड दैट दिस इज़ वन मूवी आई रियली वांट टू बी पार्ट ऑफ. और जब नज़दीक आता गया शूटिंग के टाइम पे, तो सैडली देयर वाज अ चांस दैट आई वुडंट बी एबल टू डू मारीगोल्ड, क्योंकि मेरा एक दूसरा कमिटमेंट था अब्रॉड जाने के लिए एक टूर पे. लेकिन वो कैंसिल हो गया, एंड लुक्स लाइक इट वाज इन माय नसीब कि आई डू मारीगोल्ड. टर्न्ड आउट टू बी रियली गुड फन. एज आई सेड, मेरा जो रोल है, सब सारे सीन्स जो है सलमान और एली के साथ था. तो एक एक्ट्रेस के लिए इंटरेस्टिंग तो ज़रूर था कि टू वर्क विथ a big star from Bollywood and one from Hollywood at the same time. तो very very interesting for me. जैसा कि आपने कहा कि आपका जो रोल है, ये रोल मिला आपको, वो दिल चाहता है देखने के बाद मिला है, तो कितना अलग है और कितना मिलता जुलता है उसका? हाँ, आई थिंक मिलता जुलता सिर्फ उतना है कि ये जो कैरेक्टर है रानी की, वो बहुत ही मुंहफट है. वही बोल देती है जो मन में है, विच इज़ सिमिलर टू प्रियाज कैरेक्टर इन दिल चाहता है. शी इज़ नॉट अफ्रेड ऑफ एनी वन. शी इज़ नॉट अफ्रेड कि एक हॉलीवुड एक्ट्रेस आती है इंडिया में और वो एकदम बिच्ची रहती है रानी के कैरेक्टर के साथ इन द फर्स्ट सीन दैट आई एम इन. लेकिन वो इंटिमिडेट नहीं होती है किसी के साथ. एंड आई थिंक दैट्स व्हाट वाज सिमिलर विद द कैरेक्टर्स. लेकिन यहाँ पे किसी को मैं थप्पड़ नहीं मार रही हूँ. Okay, this is a film like more of Bollywood and Hollywood Yes. mix, Mm. like actors and with the Hollywood film with the Bollywood masala. Correct. So it's not a first movie with the Hollywood and Bollywood comes together. But how different is this film is comparing to other movies that? What's nice is यहाँ पर जो है हॉलीवुड बॉलीवुड का जो मिलन है, it's being shown not in a way which is either trying to make fun of it or whatever. It's very matter of fact. जो बॉलीवुड दिखाया है इस पिक्चर में is only the very essence of Bollywood. Actual shooting of a movie, what happens when they're shooting a song sequence, how the choreographer deals with the dancers, how the production assistants run around. जो होता है on a set, that is what has been shown. Nothing more, nothing less. The only comedy angle is probably Rakesh Bedi's character, who is a very funny director. He plays a very funny director on the set, but otherwise no fun is being made of Bollywood or anything like that. It's just Hollywood's way of shooting Bollywood, and I think they've done it in a beautiful way. Of course, there are lots of colors and big sets and great choreography, good songs, all that go into the making of a good Bollywood movie anyway, but with that extra Hollywood twist. So tell me what the film is all about, Marigold. Well, I would call it the tagline they have is an adventure in India. मेरे हिसाब से it's a romantic adventure है इंडिया में for sure. The romance being between Ali and Salman. और ये movie probably prove करता है, and I think for people like me जिन्होंने शादी भी किया है फिरंगी के साथ, prove करता है कि no matter where you come from in life और कहाँ से आते हैं लोग, लेकिन if it's destined और नसीब में है तो all things coming around, it ends up being what it's supposed to be, and you end up doing what you're supposed to do. And it's nice. Here it's nice because of the Western culture and the Indian cultures being married, as far as the movie is concerned, the way it is shot. They show, royalty in India. They show Bollywood in India. They show, contemporary people like me and my fiance, the guy who plays my fiance and all, who are all modern Indian characters. Could be anybody off the street, who people will relate with. So it's very down to earth, and it's a film that I think people will enjoy. कुछ ज़्यादा डिशुम विशुम कुछ नहीं है इसमें. Adventure जो है एक अच्छा, as I said, अच्छा romantic adventure है. It's enjoyable. Willard as a director. Willard was lovely. He was really nice.
he had जब मिलते हैं आप विलर्ड से तो you think ऐसा चुटकी बजा के उनको ऐसे घुमा सकते हैं because he's such a sweet guy and very quiet and soft spoken. लेकिन despite all of that he knows what he wants, and when he's on the set as a director उनको पता है कि उनको क्या चाहिए, उनके कैरेक्टर से क्या चाहिए. जब हम बैठे थे स्क्रिप्ट के साथ, it was very, what was great was स्क्रिप्ट में ही लिखा था ठीक से अकॉर्डिंग टू द डायलॉग एक्सेट्रा कि कैरेक्टर्स कैसे होनी चाहिए. तो इट वॉज वेरी ईजी फॉर अस actors, and he was one of these directors who allow an actor to put in a lot more. वो कहते थे क्या चाहिए उनको इस सीन में से, और जो हम चाहते थे हम ऐड कर सकते थे, which was great, and he kept it. Okay, as he is a Hollywood director, so do you find any difference working with the guy you also work for Bollywood also? Yeah. So did you find any difference in working style of Bollywood and Hollywood? Yes, I have. I have worked with other international productions before, and there is a vast difference. But I would have to say, I mean, from the productions that I've worked with in India, मैंने जैसे कि दिल चाहता है में काम किया था, उनका वर्किंग स्टाइल एकदम हॉलीवुड की तरह था. तो ऐसा नहीं है कि बॉलीवुड में ऐसा नहीं हो रहा है काम. Having a Hollywood director, yes, with different sensibilities, अलग ही था, एक्टर के लिए अलग था. the way he approaches his scenes, the way he approaches the shooting etc, वो interesting था हमारे लिए, as opposed to चलो बैठो सेट पे 2 घंटा, चलो लाइटिंग करो. none of that was happening. Everything was on the ball, क्यू शीट के हिसाब से सब कुछ चल रहा था. अगर 9 बजे शुरू करना था शूटिंग तो 9 बजे शुरू होती थी, एंडिंग पैकअप 6 बजे, तो 5 to 6 you were allowed to go, which was great for all of us to have a chance to work in a setup like that. So what was your experience working with Salman and Rani? Oh, Salman, it was great fun. Apprehension तो था ही, क्योंकि सब लोग कह रहे थे कि द ब्रैट ऑफ बॉलीवुड एक्सेट्रा, अरे बहुत ट्रबल देगा, ये वो, शूटिंग पे टाइम पे नहीं आएगा, दिस दैट. लेकिन कभी नहीं, नॉट अ सिंगल डे डिड वी हैव अ प्रॉब्लम विथ हिम. अगर इट वाज अ 6:30 इन द मॉर्निंग शेड्यूल, गोरा में जहाँ पे भी थे हम लोग, राजस्थान, wherever, he was there on time, no problem at all. And इस पिक्चर करने के बाद मुझे पता चला है कि क्यों इतने सारे लोग सलमान के बारे में इतना अच्छा बोलते हैं, क्योंकि ही सिंसियरली इज़ a fabulous guy to be around. He's a really, really wonderful person. और ऐसा नहीं है कि कोई false है. After the movie, he has made it a point to stay in touch. वो हमेशा फ़ोन करते हैं, बुलाते हैं उनके घर पे कुछ डिनर विनर के लिए, पार्टी वार्टी के लिए. ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो टाइम पे दोस्त थे, and he forgot about everybody. Definitely not. हाँ, थोड़ा बहुत तो स्टार है ही, but that he has to be, otherwise he won't be Salman Khan. But very interesting to be around him, and we had a lot of fun. Had a lot of fun on the set. वो अपना क्या बोलते हैं, जेट स्कीज या वो 4-wheel ड्राइव वाले बाइक्स लेके आते थे ऑन द बीच. Everyone just had a great time around him. It was great. उनका घर का खाना बहुत ही अच्छा था, बोलना ही पड़ेगा मुझे. हर दिन लंच पे line होता था to go to Salman's van to eat what had come from his house. So it was a nice unit, great setup. Ali Daughter के बारे में लोग सोच रहे थे, I mean at least I was wondering, Hollywood से आ रही है, क्या tantrums होगी उनकी, will she be difficult to get along with, will she be cold? बिल्कुल नहीं, she was fine. She had also seen Dil Chahta Hai, so she had seen who is playing Rani, she had known who I was. And once she was here, yeah, we had a lot of fun hanging out on the set, hanging out in our vans. We ended up giving gifts to each other at the end of the movie. And I know for a fact that even though now Ali has also become really big now after Heroes, this big serial that she's doing, अगर मैं जाऊँ उधर and I to America, and if I pick up the phone and call her, I know that she'll be there. She's one of those people. So what was the best experience over this movie? I think the best experience would be probably Rajasthan, when we shot in Rajasthan. उधर का जो माहौल था बहुत ही अच्छा था, अलग था. They were shooting the palaces and they were shooting royalty, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा एंड के सीक्वेंस जहाँ पे हम लोग एक डेजर्ट में शूट कर रहे थे, एक ओएसिस बना हुआ था. It was very nice, very hot, लेकिन very very nice, and the whole cast was there, everybody was there, which is why it was
all the more interesting. हाँ हम लोग उस heat में बहुत ही जल रहे थे वो सारे कपड़े वपड़े पहन के, but it turned out to be great fun, really good fun. Even Shankar Ehsaan Loy has done a lots of experiment in terms of music with some English and Hindi songs together. Yeah. Yeah. So what do you say about that? Wonderful. Shankar Ehsaan और Loy की जो music है, I mean of course again after DCH, you know, they've worked again on this project. Or I love the songs. I love the songs of Marigold. There's one song by Shan which is beautiful. There's the dance song between Salman and Ali, you know, which has the Taj Mahal in the background, etc. Lovely, lovely track. And it was great क्योंकि Ali कर रही थी एकदम Bollywood dancing और अच्छी तरह से कर रही थी, तो बहुत ही अच्छा लगा. It was very good. And initially वो nervous थी ये सब steps करने के लिए, लेकिन it turned out to be great and she was great. She was very, very at ease with all of that.